Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello, audience. How are you? Hope you're all fine. My name is Aisha Junaid, and I am an instructor of CIT department at GCTW Little Road, Lahore. And today I have a very interesting topic which is going to delivered by me is the TEDx talk. The TEDx talk is the new power. It is another task of our training which is nowadays going on with the collaboration of Rehan AI Teachers Institute as well as the TEPTA. Thanks to both of institutes for giving us the opportunity to enhance our technical skills after learning the different tasks and tools and different websites of AI is to boost up our technical skills. So here I have a very interesting topic of new power, which is introduced by the Jeremy Hammonds, and it's a TEDx talk. And I would like to give the review in English as well as in the Urdu. First of all, I would introduce the speaker and what who is the speaker, and what is the role of the speaker in this talk. The speaker is the Jeremy Hammonds, and Jeremy Hammonds is an Australian-born activist and entrepreneur and movement strategist. He is the co-founder and chairman of Purpose, an organization that builds movements and running the different campaigns. And he also co-founded several influential digital movements, including the Awaz and All Out and Gets Up. So he is also the member of the different organizations. He became the particularly known for explaining the concept of new power, the idea that is highly connected word influence increasingly comes from the participation, communities and networks and collective action rather than only from the traditional institutions. He also gave the TEDx talk, What New Power How crowd powered can change society and policies. So it's all about the speaker who gave the idea about the new power in this TEDx talk. Let's start to review in English. New power review in English is that the new power by Jeremy Hammonds and the Henry Timers explains how power is changing in our highly connected digital world. The author compare old power centralized, controlled, and leader driven with new power, which is open, particularly collaborative, and driven by the communities. So he gives us the idea about the new power and the old power. He also gives us the comparison between the new power and the old power. The book explains how social media, crowdsourcing, online communities to influence organization and business. The TEDx also tell us the lack of bucket challenges and Black Lives and different demonstrative how large groups can participate and create monuments around an idea. One of the most useful is that new power is not automatically better than old power. Sometimes organizations need a combination of both approaches, strong leadership and structured alongside the particularly participation and the collaboration. Overall, this book gives us the idea. The book is about the thought-provoking and especially useful for understanding leadership. He tells us about the leadership. He gives us the different ideas about the leadership. He gives us the idea new power and the social movements, technology, business, and modern communication. Its main lesson is that it's the today connected world, and the people don't just want to receive; they want to be participate. So it's all about in English about the new power. I would like to give you the review in Urdu. तो उर्दू में इजाज़त देने के लिए मैं आपको जैनमी जो कि इस न्यू पावर का एक मुसन्फ़ है इस बात के बारे में उन्होंने हाईलाइट किया है कि जदीद और न्यू दौर के असर रसूख किस तरह तब्दील हो रहे हैं पावर के दरमियान न्यू पावर ओल्ड पावर के दरमियान उन्होंने फ़र्क को वासिया किया है और उन्होंने बताया कि चंद लोग जो चंद अदारे जो ओल्ड पावर के हाथों में थे
जो ताकतवर लोगों के हाथों में थे, जो फैसला अमूमन ऊपर से नीचे की तरफ आते थे और आम लोगों का किरदार कहीं भी नज़र नहीं आता था। तो उन्होंने आम लोगों के किरदार को हाईलाइट करने के लिए न्यू पावर का आइडिया दिया। इसके बरक्स न्यू पावर में लोगों को ट्रांसपेरेंसी, कोलैबोरेशन, पार्टिसिपेशन एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के बारे में बताया गया। उन्होंने इस बात के ऊपर भी वजाहत की है कि किस तरह से ऑनलाइन कम्युनिटीज़ आपस में आम लोगों को डिफरेंट आइडियाज़ और मूवमेंट्स के बारे में अपना इजहार अपने नज़रिए को पेश कर सकते हैं। किताब का एक अहम सबक ये भी है कि न्यू पावर हमेशा ओल्ड पावर का मुकम्मल मुतबादल नहीं है। मुख्तलिफ हालात में दोनों को मिलाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी न्यू पावर और ओल्ड पावर के कम्बिनेशन से एक न्यू पावर को भी इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है ताकि माशरा बेहतरीन और ऐसा तरीके से अपने काम को अंजाम दे सके। ओवरऑल हम आपको यही पैगाम देते हैं कि इस किताब से हमें ये सबक मिलता है कि आज की दुनिया में कामयाबी सिर्फ ताकत रखने वाले नहीं, बल्कि लोगों को शामिल करने, उनको सुनने, उनकी राय को सामने रखते हुए, उनके आइडियाज़ को सामने रखते हुए, उनके साथ मिलकर काम करने ही से हासिल हो सकती है। तो ये बहुत ही प्यारा मैसेज था, ये बहुत ही प्यारी किताब है, ये बहुत ही प्यारी रिटन एविडेंस है जो कि जेरमी हेमिंस ने पेश किया न्यू पावर के नाम से। और टेडेक्स टॉक में ये सब कुछ मैं आपको उर्दू और इंग्लिश के रिव्यू के साथ पेश कर चुकी हूँ। होप यू ऑल द ऑडियंस लिसन इट एंड लाइक इट, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट as many as you can. Thank you so much for listening. Allah Hafiz.